I went to Grady and like 8 hours wait time even though you have a good health insurance. Okay, so hey guys, first thing first. So today we had the first power cut of 2020 in our apartment and I was shocked. मैं बहुत डर गया था कि अगर power cut 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए हो सकता है, so that means there could be a power cut for a longer period of time. So we ran to grocery store the same night today and we got some grocery. Like हमने मतलब 2 महीने का सामान खरीद लिया and like I think I will not have to like go for grocery shop at least till like 1 month because I also bought like the other milk which will expire on 24th April, so at least like 1.5 months we're good. So that's a good news. But the biggest thing that I noticed was that they were even out of toilet paper and paper towels were obvious, but the shocking part was that they were even out of bread. So that's why I went to the public store nearest to Georgia Tech and got 3 more packs of bread, so I should be good for that too. But the next news we got was regarding our spring break. So let me read my email. So it says that we will be getting 1 more week off after our spring break. So our spring break is starting from today, that is it is like 13th of March or something till like 20th March. So we will be getting 1 more week off and no homework, no classes, nothing at all. And later on we will be switching to online classes till maybe like April 25th or 21st, something like that. मतलब वो change कर सकते हैं. Email में लिखा हुआ है that we recommend not to travel for international students, that you should not travel. If you consider you can, because like there's a chance that if things like go on all right, they might invite us for final exams in class. But that's different in Harvard because the news says that they are actually kicking them out of dorms as well. But our case, मतलब Georgia State University में या Georgia Tech में अभी dorms close नहीं हुए हैं because students are still living there. They can live there. But Harvard में case है since like 10,000 students are international, so it's kind of difficult for them to find a place other than dorms. तो उनके पास एक ही चारा रहता है that they can either go back to their country or like stay in Airbnb or something like that. So they have very limited options. तो वो afford करना मुश्किल है. So they're still like reaching out Harvard University so that they can get funding to stay somewhere. And now next I read about Canada. So मेरे काफ़ी friends Canada में पढ़ते हैं, like in Vancouver or in Toronto. वहाँ पे मतलब scene ये है कि most of the students they do like hourly job. I am lucky that I'm getting a stipend, so my salary will not be affected. But एक साल पहले मुझे भी hourly payment मिलती थी as an undergraduate student, but as a graduate student you get stipend. So I feel very grateful for that. But जिन्हें hourly payment मिलती है, they cannot survive without that because they were paying their rent, like their housing, utilities and all that using their salary from that hourly $10 an hour जितना भी मिलता था उससे गुजारा करते थे. But now it's very difficult for them, so the only option they have is to go back to their country. So मैंने चेक किया कि काफ़ी स्टूडेंट्स वैंकूवर से इंडिया फ्लाइट ले रहे हैं 40,000 रुपीज़, but it's still risky. अगर इंडिया में केसेस बढ़ जाते हैं, if they impose like ban in India for few months or few days, it's risky. So मतलब इधर मुझे मतलब अपनी email में अभी GSU की email में भी लिखा है we recommend not to travel. So I don't think you should take that risk. But now moving on to the next loss that I had to face. So abhi at this time I should have been in California because this is my spring break. So I had planned like 2 months ago, 1.5 months ago, I booked my flight. So I booked 3 flights basically, and all those flights include Atlanta to San Francisco, and San Francisco से मैं कहीं और जाने वाला था. That's a special place. From that place back to Atlanta. So there were 3 flights, and just to save like $50, I didn't book a flight with Delta, even though I am like I have gold credit card by Delta, which gives me like 1 checking bag free every time I fly with Delta. But मुझे मतलब $50 नहीं बचाने चाहिए थे मेरा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है. सो द फर्स्ट फ्लाइट दैट आई बुक्ड वाज अटलांटा टू सैन फ्रांसिस्को यूजिंग फ्रंटियर एयरलाइंस. तो मैंने वो कैंसिल की. दे गेव मी रिफंड फॉर दैट $150 एंड वो कहते दैट यू हैव 90 days टू लाइक बुक इट अगैन. मैं $150 कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ कि ये ले $150 की फ़्लाइट बुक कर ले एंड मुझे 150 कैश में दे दे. नाउ नंबर 2 फ्लाइट दैट आई बुक वाज अटलांटा टू दैट स्पेशल लोकेशन. आई डोंट वांट टू रिवील इट राइट नाउ. सो दैट लोकेशन तक मैंने फ़्लाइट बुक की थी डेल्टा के थ्रू, and that was through my Sky Miles, and also some like half amount I paid like $10-15. They refunded me the entire amount. Even some of my friends who booked flight from Atlanta to DC using Delta, they refunded like 100%. और कोई लिमिट नहीं, ये भी नहीं कहते कि 1 साल तक आपको वही फ्लाइट मतलब दोबारा बुक करनी पड़ेगी. Nothing like that. So I was very surprised by that. And the number 3 airline was American Airlines. That was from that special location in California to Atlanta, and that costed me $190. And American Airlines said, no, we cannot change your flight. If you want to change your flight, you have to pay $150. Because अभी मैं अगर टिकट का प्राइस देखूँ, that is like literally $100 for a return trip, and they are asking me for $150 to change the date, or I can just like waste my $190 for that flight. So basically I had that loss, and now on I'll be careful. I will either buy insurance or buy a flight with Delta because Delta seems like pretty best in the country. So hi guys, I've made it to Georgia Tech, and now we will be talking about what
students here, international students here, had to go through due to the pandemic? हाय, तो मैं एक रैंडम जॉर्जिया टेक स्टूडेंट हूँ. मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और एक हफ्ते के लिए तो हमारी सारी क्लासेस क्लोज हैं स्प्रिंग ब्रेक के कारण. बट आई थिंक उसके बाद पता नहीं कि क्या होने वाला है. अभी 2 हफ्ते हो गए अब तो. हाँ, अब तो 2 हफ्ते हो गए, पर हमारी क्लासेस सिर्फ अभी आगे 1 हफ्ते के लिए बंद है स्प्रिंग ब्रेक के कारण. पर पैंडेमिक के कारण कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है. तो हमारे सारे प्रोफेसर्स ने इनफैक्ट आज ही सुबह हमारे को ईमेल भेजे कि कुछ नहीं होता कि अगर ये सब चल रहा है, तुम्हारी क्लासेस और तुम्हारे टेस्ट चलते रहेंगे. तो उन्होंने पूरी अरेंजमेंट्स कर दी हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन होएगा. मतलब कि जॉर्जिया टेक इज़ लाइक टॉप नॉच टेक यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने वेरी ट्रू टू देयर नेम दे मूव्ड एवरीथिंग. वो ईमेल्स पे फॉलो अप करें क्योंकि जीएसयू, एमरी, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है, दे हैव लाइक सस्पेंडेड ऑन, मतलब जो होमवर्क वाला प्लेटफॉर्म है आई कॉलेज और लाइक ई कॉलेज, वहाँ पे पूरा मतलब टर्मिनेट कर दिया क्योंकि होमवर्क कुछ ड्यू नहीं है. 2 हफ्ते सारे लोग फ्री है, पर जॉर्जिया टेक में नहीं है. सुपर सरप्राइजिंग. सुपर सरप्राइजिंग नहीं है. जॉर्जिया टेक ऐसी ही यूनिवर्सिटी बहुत रिगरस है, पर आई थिंक हाँ, दिस इज़ बिजनेस एज यूजुअल. एवरीथिंग मतलब कि सारा कुछ ऑनलाइन आ चुका है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कुछ रुकेगा. और लैब्स भी ओपन है, सो यू आर कंटिन्यूइंग टू गेट पेड थ्रू द रिसर्च. बट कनाडा में अभी हुआ है कि काफ़ी जो भी स्टूडेंट्स ऐसे, मैं मतलब लास्ट ईयर आवरली पे मुझे पे चेक मिलता था. तो अगर मैं वो जॉब कर रहा होता तो मुझे पे नहीं होता. बट लकीली वी आर गेटिंग स्टाइपेंड और लैब्स ओपन है, तो हम वी आर रिक्रूटेड. बट आई फील सैड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लाइक वर्किंग इन लाइक लाइब्रेरी, लाइक रेक सेंटर, उन्हें फंडिंग नहीं मिलेगी. दैट्स द कॉन. लैब्स का ये भी है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है जॉर्जिया टेक में कि होना क्या है, क्योंकि जॉर्जिया टेक काफ़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो लैब्स का काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पर काफ़ी हमारी इक्विपमेंट जो चाइना से आ रही थी वो सारी डिलेड है. तो जैसे मैं क्वांटम डॉट्स में काम करती हूँ, चाइना से हमारी काफ़ी हद तक इक्विपमेंट आती थी क्वांटम डॉट से रिलेटेड, तो वो सारी मतलब कि बंद हुई भी है. तो हमारे को पता नहीं कि लैब जाने का फ़ायदा भी होएगा. और दूसरी चीज़ ये है कि शायद लैब्स भी बंद हो जाए, मतलब कि रिसर्च लैब्स. ऑफ कोर्स क्लासेस वाली लैब्स तो बंद ही हैं, पर जो रिसर्च वाली लैब्स हैं उनका पता नहीं अभी. एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट तो यहाँ पे मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सीन है? मतलब आर यू लाइक स्केयर्ड कि हेल्थ इंश्योरेंस का कितनी लंबी लाइन आजकल ग्रेडी. आई वेंट टू ग्रेडी एंड लाइक 8 hours वेट टाइम इवन दो यू हैव अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस. तो उसका भी सीन है. आप हर स्टूडेंट के पास यहाँ पे इंश्योरेंस है ना. आई मीन बहुत एंजाइटी है. स्टूडेंट इंश्योरेंस इज़ नॉट एज गुड एज बाकी अमेरिकन की इंश्योरेंस हो, विच इज़ ऑब्वियस. तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यही है कि बीमार नहीं होना क्योंकि अगर बीमार हो गए फिर पता नहीं क्या होएगा, क्योंकि सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है. तुम इंडिया वापस नहीं जा सकते, और अगर तुम बीमार हो गए तो बहुत ज़्यादा हैवी प्राइसेस लगेंगे तुम्हारे मतलब कि ट्रीटमेंट लेने में. आई वांट टू ऐड ऑन अबाउट द हॉस्पिटल सिनेरियो इन यूएस एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि मैं पहले सोचता था कि इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से कितने लोग मतलब यूएस स्पेशली आते हैं फॉर दिस सर्जरी. सो लाइक द हेल्थ सिनेरियो मस्ट बी द बेस्ट इन यूएस. एंड यू वोंट बिलीव दैट आई लिव लिटरली लाइक 3 blocks अवे फ्रॉम सीडीसी, जहाँ पे वैक्सीन वगैरह हर जगह बन रही है. सो आई वॉज शॉक्ड कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यूएस में मतलब कैस्केट्स to like fight against this pandemic should be available, but they were not. So मेरा एक closest friend, he was suffering from one of the symptoms. तो रात के 9-10 बजे he was like having trouble breathing, and that's one of the symptom of pneumonia, and that's also one of the symptom of the pandemic. So उसके बाद he like felt like going to the hospital, so he went to the hospital and वहाँ पे कास्ट सिस्टम चल रहा था. So just like India has caste system, so यहाँ पे health insurance का caste system मैंने देखा that if you have better health insurance you will be able to get to meet your doctor at the first place and you will have to pay the minimum amount, like सबसे कम पैसा देना पड़ेगा अगर आपकी insurance better है. So he had to wait for 8 hours to get his turn just to see that he has that like pandemic, or just to see that if he has that big problem or not. और 8 घंटे बाद उन्होंने बताया you seem pretty fit, so because you don't have the symptoms like cough, fever etc. or like sneezing, तो इस कारण there is like very less chance that you will have it. So उन्होंने बस उसे जाने दिया without like doing the actual test because they have very limited test kits to test the virus. So that was very shocking for me to believe it. But like other cases like South Korea and China, they have like the drive-through test areas जहाँ पे आप मतलब बिना किसी को मिले अपना टेस्ट करवा सकते हो. So they are better than US currently, but hopefully drive-through आ जाना चाहिए US में. And now talking about the grocery, I'm scared कि पता नहीं कब grocery भी खत्म हो जाए. I think ऐसा टाइम भी आएगा कि नोटबुक पेपर भी खत्म हो जाएगा. हाँ, आजकल ग्रोसरीज मतलब कि काफ़ी धड़ाधड़ निकल रही हैं. इनफैक्ट हम दोनों अभी पब्लिक से ही आए हैं और वहाँ से मैंने बहुत सारे फिर से लेमन्स लिए हैं और ब्रोकली वगैरह. तो आई थिंक जो हमने सैलड वाला सेक्शन देखा उसमें से सारे सैलड्स गायब थे. काफ़ी सारा पैकेज फूड भी खत्म हो रहा है यहाँ. So we just did like groceries of about like 2 months. And how much like we have spent? Like आपने पूरे महीने की मतलब 2 महीने? I think 1 महीने का मैंने पूरा ग्रोसरीज का काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है. तो आई थिंक वो भी फाइनेंशियल
मतलब कि फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर मैं सोचूं, मेरे बाकी जो दोस्त हैं GSU में, एमरी में, जॉर्ज टेक में, तो उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. Yeah, I mean, I have honestly spent like $200 for the next 2 months grocery. You too, right? And also, according to Delta, there is EPA-enabled disinfectant on all flights, which is rated to combat many communicable diseases. But still, I will recommend to fly if your doctor allows, or if you feel like it is very, very urgent. Only then travel.